Alright यार. So previous वाली class के अंदर we did the working on thermometric properties. So अब जो last काम बच गया है ना वो आज start करा दूं. So एक second ना मैं थोड़े से students को और admit कर दूं before I get started. All right, yaar. So as I was saying here, previously we discussed thermometric properties. So the last working that is left now, वो start करा देता हूँ. This is kind of थोड़ा सा bits and pieces में theoretical section है और थोड़ा सा calculation वाला portion भी इसके अंदर है. So this falls under the heading. This is basically the last subtopic of heat. So this falls under the heading of first law of thermodynamics. तो मैं जरा थ्योरी का काम पहले कर लूं, फिर इसके बाद ये है कि we'll move on to the questions. Okay, so the last working that is left in this section of heat is referred to by the term first law of thermodynamics. So before I move on to the first law, थोड़ा सा prerequisite पहले discuss कर लेते हैं because these terms are kind of going to be used throughout the lecture. So कौन से terms discuss करना है ना, पहले जरा quickly वो बता दो. So the first thing comes under the heading of, okay, so what I'll do is कि यार मैं highlight नहीं कर रहा हूँ, brown color के marker से बस side पे lines बना दूंगा. I think थोड़ा सा convenient हो जाएगा. So the first working comes under the heading of concept of internal energy. ठीक है, मैं statements read कर लूँ. आप जरा try कीजिएगा कि याद भी रख लें while I'm going through these statements. So internal energy is denoted by the symbol of either U or by the symbol of delta U, any one of the two. Now for solids, for liquids, and for real gases, so solids के लिए, liquids के लिए, and for real gases, internal energy is defined as the microscopic sum of the kinetic energy and the potential energy of the molecules. So solids के लिए, liquids के लिए, and for real gases, we define internal energy as the microscopic sum of the kinetic energy component and the potential energy component of the molecules. Now moving on, kinetic energy is associated with the temperature of the substance, whereas potential energy is associated with either you can call intermolecular bonds or intermolecular forces. So kinetic energy at molecular level depends on the temperature of a substance, and potential energy at molecular level is basically elastic potential energy, which is either you can say associated with intermolecular forces, or you can say that the potential energy component is associated with intermolecular bonds. Now, moving on further, kinetic energy will increase as the temperature begins to rise, and kinetic energy will decrease as the temperature begins to fall. See, so temperature ke increase or decrease ke saath, kinetic energy of the molecules is associated. So a rise in temperature causes an increase in the kinetic energy, and a fall in temperature causes a decrease in the kinetic energy. Potential energy, on the other hand, as mentioned in the next statement. So potential energy increases when the bonds are either weakened or when the bonds get broken. Example could be during the process of melting or boiling or evaporation or sublimation for that matter. So whenever there is a weakening of bonds or whenever there is a breaking of bonds, that is when the potential energy of the molecule increases. So bonds ko break karne ke liye, we need to supply energy. So whenever bonds breaking occurs, melting, boiling, evaporation, or sublimation, the energy that we provide
gets converted into the potential energy of the molecules, or to be more precise, it gets converted into the elastic potential energy of the molecules. Okay, so potential energy will increase when the bonds are either getting weakened or when the bonds get broken. Hence, melting के अंदर, boiling के अंदर, evaporation के अंदर, and sublimation. Likewise, potential energy will decrease when the above processes are reversed. That is, during freezing, during condensation, during solidification, or during reverse sublimation. So, for solids, let me just give a quick recap up till this point. So, for solids, for liquids, and for real gases, we define internal energy as the microscopic sum of the kinetic energy component and the potential energy component of the molecules. ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई. Secondly, kinetic energy component depends on the temperature. So it will increase and decrease with the temperature. So as the temperature rises, kinetic energy will increase, and as the temperature drops, kinetic energy will decrease. Similarly, potential energy changes when there is a change in state. So during melting, boiling, evaporation, and sublimation, when you have to provide energy, that is when the potential energy component will increase. And if you go for reversal process, that is freezing, condensation, solidification, and reverse sublimation, when you have to extract energy, that is when the potential energy component will decrease. तो यार आई थिंक इसको शॉर्ट फॉर्म में लर्न करने का तरीका ये है जो मैंने एज अ साइड नोट लिखा हुआ है एंड लेट मी जस्ट शो दैट टू यू. आई थिंक याद करना आसान हो जाएगा. मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ साइडवेज. तो आई थिंक इस तरह से अगर आप लर्न कर लोगे ना तो ये आपके लिए काफी हैंडी रहेगा. द पोर्शन व्हिच आई एम हाइलाइटिंग विद द पिंक मार्कर, दिस काइंड ऑफ टेल्स यू एवरीथिंग. सो अगर आप साथ साथ रीड कर लो ना तो आई थिंक आप खुद ही फॉलो थ्रू कर लोगे कि kinetic energy changes as the temperature changes. Potential energy changes when there is a change in state. इस तरह से याद करना आसान हो जाता है. So when the temperature rises, kinetic increases, or when the kinetic increases, temperature rises, जिस तरह से भी कहना हो. And when the temperature falls, kinetic decreases. And likewise, for melting and boiling, potential will increase, but for freezing and condensation, potential will decrease. See, so I think as a side note, ये पूरा statement अगर आपको याद हो, so this more or less kind of explains you the idea of internal energy or the concept of internal energy. Ibrahim, I think as such तो नहीं, बस मैंने explanation वाला काम किया है, but mostly I think ये वो वाला काम है जो जब मैं scroll up करूंगा ना in a while तो I guess तुम follow कर लोगे. So सिर्फ read through करोगे ना इब्राहिम, I guess follow हो जाएगा. Now, moving on further. ठीक है, so अब I am going back to the main slide. So next वाली wordings देख लेना. So for ideal gases, since there are no intermolecular forces, therefore, the potential energy component is going to be zero. Hence, for ideal gases, their internal energy only depends on their kinetic energy component. Okay, so as far as ideal gases are concerned, the last paragraph, since there are no intermolecular forces, therefore potential energy component for ideal gases will be zero. Hence, for ideal gas, their internal energy U और delta U, दोनों सिंबल सही है जो आपको सूट करे, only depends on their kinetic energy component. ठीक है, तो solids, liquids and real gases के लिए it is the sum of the kinetic energy component and the potential energy component. Whereas for ideal gases,
since there are no intermolecular forces, so there is no potential energy component to begin with. Hence, for ideal gases, their internal energy, U or delta U, only depends on their kinetic energy component. सही? तो ये तो आपकी एक चीज हो गई रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी को आप डिफाइन कैसे करते हैं. सो थिंक ऑफ दिस एज द फर्स्ट प्रीरेक्विजिट बिफोर वी मूव ऑन टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अच्छा, अब नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं. So after the concept of internal energy, जो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है, that comes under the heading of concept of work done in gases. ये भी जरा एक्सप्लेन कर दूं, आप वर्डिंग्स को देख लीजिएगा. सिंबल्स कोशिश करना याद रह जाए. Work done is denoted either by the symbol of W or by the symbol of delta W, जो भी आपको सूट करे. So internal energy के लिए it was either U or delta U, and for work done it's either W or delta W, जो भी preferential choice आपकी हो. The next statement, in case of gases, work done is given by the formula W is equal to P times delta V. This is one way of writing it down. Alternately, delta W is equal to P times delta V, the alternate way of writing it down. अब आपकी choice है कौन सा symbols आपको सही लगते हैं. P in this case refers to the pressure of the gas. And delta V refers to the change in the volume of the gas. So to calculate work done in case of gases, we need to know the pressure and we need to know the change in volume. I'll just give you an example. So pressure multiplied by change in volume gives you work done in case of gases. Now, before I move on to how can we apply this formula, um, although iski derivation is generally not asked in A2s, so requirement तो नहीं है, but बहुत simple सी derivation है. So मैं might as well two line की derivation है, so might as well मैं derivation कर लूँ. But I've mentioned the fact that the derivation is not needed. सही तो पूछते तो नहीं है. The only reason I'm doing this is because this is based on the O levels वाला formula. So most of you probably already know this. So you know अगर आप O levels के अंदर work done लिखते थे, तो imagine if work done is represented by the formula force multiplied by the distance moved. If I assume the distance moved to be a small distance, then I can denote the distance by the term delta D. So the formula for the work done, instead of F into D, can now be written as F into delta D, where the term delta D refers to small amount of distance that is moved. Now again from O levels, you would remember force can be broken down and written as pressure multiplied by area. So the formula for work done, if simplified, can also be written as follows: P for pressure, A for area, delta D for small amount of distance moved. Next, we know volume is given by the formula area multiplied by distance. So if volume is A times D, then A multiplied by delta D can be replaced by the term delta V, where delta V represents change in volume. If I replace the red box in place of the curly brackets which I'm marking right now, so replacement I guess आप खुद ही कर लोगे, and the final form can now be written down as follows. So as I said, requirement तो नहीं है for you to remember the formula. But since work done का formula O levels में किया हुआ था, तो might as well मैंने इसको साथ साथ proof कर दिया. So once again, P in this case refers to the pressure of the gas, and delta V in this case refers to the change in the volume. अच्छा, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है ना,
So before I move on to that working, जो next वाले दो statements हैं, जरा पहले उनको follow कर लीजिएगा, and then I'll move on to the application of this formula. So the next line, I've written down the statement. In gases, when expansion occurs, we use the term work is done by the gas. And similarly, in gases, when compression occurs, we use the term work is done on the gas. So whenever gases undergo expansion, so whenever there is an increase in volume, then we refer to that condition by the term work is done by the gas. So work done by the gas refers to gas undergoing expansion, or work done by the gas refers to an increase in the volume of the gas. And similarly, if a gas undergoes compression, then that condition is generally denoted by the term work is done on the gas. So compression, that is, when the volume decreases, work is said to be done on the gas. And expansion, when the volume increases, that is referred to as work is done by the gas. Now, let me just give you an example with regards to these wordings before I proceed further. So मैंने यहाँ नीचे थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हुई है जहाँ पे मुझे कुछ स्टेटमेंट्स को भी इंक्लूड करना है. So I leave that space for a while. And to apply this formula of work done, imagine if a situation is given to you where the pressure is given to you as 100 kilopascal. The initial volume is given to you as 5 meter cube, and the final volume is given to you as a 7 meter cube. So gas is at a pressure of 100 kilopascals. The volume of the gas increases from its initial value of 5 and goes to a final volume of, let's say, 7. Now, in this question, if the wording says, और अब ये जरा carefully देखिएगा, calculate work done by the gas, then based on the formula, this should be your result. Pressure times change in volume. मैं numbers लगा के result भी साथ साथ लिख लेता हूँ. So pressure is given to you as 100 kilopascal. मैं convert नहीं कर रहा. Let me leave the value as in the form of kilopascals. बाद में change कर दूंगा. And the change in volume should be 7 minus 5. यार अगर आप इसको sort out करोगे ना, तो surely you would agree कि आपके work done by the gas का result in this scenario, simplify आप कर लीजिएगा, it should work out to be 200 kilojoules. However, if for the same question, the wording was calculate work done on the gas. So I'm sure if somebody asks you to calculate the work done on the gas, ये तो नहीं हो सकता कि आप बोलोगे कि नहीं यार इसका तो आंसर हम निकाल ही नहीं सकते बिकॉज आंसर निकालना पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि rather you would agree if they are asking you to calculate work done on the gas, although in the question the volume is increasing, I think you can still give the answer with the only distinction being कि आप 200 के बजाय आप आंसर को फॉर एग्जांपल लिख कर दे दोगे as minus 200. So the minus sign will signify that work is actually not getting done on the gas, but rather work is getting done by the gas. सही है ना? जिसमें कंजा ने 5 minus 7 कर दिया है. So मैंने पूरा तो नहीं लिखा 5 minus 7. I've directly written down the answer as minus 200. Now, this answer should not sound unreasonable to you because let me tell you, you've actually done this working before, right through O levels. आपने ये working की हुई है. And let me give you an example.
Imagine O levels के अंदर, if you were asked this question, which I'm highlighting with the pink marker, you can relate to this question kind of. An object's initial velocity is 20, its final velocity is 40, and it takes a time of 5 seconds to execute that change in velocity. Whenever in O levels you are asked to calculate the acceleration, आप surely यही करते थे. और आपका रिजल्ट वर्कआउट करके एक्सेलरेशन का ये आ जाता था. बट नाउ लेट्स इमेजिन कि अगर सिचुएशन को चेंज करके आपको पिंक वाली के बजाय आपको येलो वाली सिचुएशन गिवन हो, तो आप प्लीज जरा येलो वाली सिचुएशन को देखिएगा. एंड इफ समबडी आस्क्स यू इवन इन दिस सिचुएशन टू फाइंड द एक्सेलरेशन, तो आप उसको मारना शुरू नहीं हो जाओगे. आप ये कभी नहीं करते थे कि नहीं यार हम तो एक्सेलरेशन निकाल ही नहीं सकते बिकॉज ऑब्जेक्ट तो एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. आप बिल्कुल एक्सेलरेशन का आंसर देते थे, बस इस तरह से दे दिया करते थे. So it kind of makes sense कि ये नेगेटिव की इम्प्लीकेशन आप राइट थ्रू ओ लेवल्स करते आए हो. एंड आई एम श्योर अगर आप नंबर्स के साथ इसको अटेम्प्ट करके देखोगे तो यू वुड अग्री कि पहले आपने 4 लिखा हुआ था, बाद में आपने -4 लिख दिया ना. सो ये चीज जो आप ओ लेवल्स के अंदर करते आए हो, एग्जैक्टली उसी चीज की रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर भी करी है कि if expansion is taking place because from 5 you're going to 7, then work done by the gas should be regarded as positive. And for the same case, work done on the gas should be regarded as negative. And if you're okay with this, तो मैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रॉपर्ली लिख लेता हूं before I proceed further. So I guess the correct way of writing down this would be that in case when work is being done by the gas, you must treat expansion as a positive entity, and you must treat compression as a negative entity. And similarly, for situation where work is done on the gas, तो इस केस के अंदर expansion should rather now be classified as a negative entity, and compression must now be treated with a positive sign. So if that makes sense, तो I guess इस तरह से recognize कर लेना आपके लिए ज़्यादा convenient होगा. सही? So up till now, मैंने 3 चीजें अभी तक explain कर दी हैं. And now I finally move on to the first law of thermodynamics. So क्या-क्या बता दिया है ना, जरा quickly एक दफा recap कर लो. The first thing was internal energy denoted by the symbol of U or by the symbol of delta U. For solids, for liquids, and for gases. Uh, Ibrahim, this was the stuff that you missed out. तो मैं quickly recap कर रहा हूँ. I think काफी सारे statements तुम follow out कर लोगे इसमें से. So for solids, for liquids, and for real gases, we defined internal energy as the sum of its kinetic energy component as well as its potential energy component. Next, we suggested that kinetic energy depends on the temperature, so it will increase or decrease as the temperature increases or as the temperature decreases. Then we further suggested that potential energy component will only change whenever there is going to be a change in state. So in this case, we recognized कि जब melting होगी
बॉइलिंग होगी, evaporation होगी, या sublimation होगी, in which energy needs to be provided. So that will cause the potential energy component of the molecules to increase. और जब reverse process होगा, so that would be freezing, condensation, solidification, and reverse sublimation. So that will cause the energy to be extracted, hence the potential energy component will decrease. फिर next हमने ये कहा था that only in case of ideal gases, since there are no intermolecular forces, therefore the potential energy component is zero. So for ideal gases, we can say that the internal energy is only governed by the kinetic energy component. ठीक है, so ये तो एक चीज हो गई regarding the concept of internal energy. Next was concept of work done in case of gases. So we recognize that the formula for work done is written in the form W is equal to P times delta V, or delta W is equal to P times delta V. P was the pressure, delta V was the change in volume. Then we further realized if volume increases, so if the gas undergoes expansion, then ideally we would want to make use of the term work is done by the gas. And likewise, if the volume reduces, so the gas undergoes compression, then we would like to mention the term work is done on the gas. और फिर उसके बाद मैंने सजेस्ट कर दिया कि अगर आपको लर्न करना हो तो आई गेस इस तरह से लर्न करना काइंड ऑफ मेक सेंस कि whenever work is done by the gas, since work done by the gas naturally goes with expansion, so we should treat expansion as a positive function and compression should be signified with a negative sign. And similarly, whenever work is done on the gas, so since work done on the gas naturally goes with compression, the compression must be treated with a positive sign and expansion must be treated with a negative sign. ठीक है, अब after this entire working, जो next वाली working करनी है, that will now bring us to what is called the first law of thermodynamics. तो थोड़ा सा आगे अब scroll कर रहा हूँ ताकि next वाली wordings पर आ जाऊं. एक सेकेंड ना. So the first question that arises is यार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पर्पस क्या है, इसको हम यूज क्यों करते हैं, इसका इंटेंशन क्या है. आई थिंक इट्स फेयरली सिंपल टू रिकॉग्नाइज कि फर्स्ट लॉ कहाँ पे यूज होता है. So let's just quickly read through the purpose of using the first law of thermodynamics. फिर इस law को interpret कर देते हैं. So this law tells us about what happens if you supply heat energy. I'm denoting heat energy by the symbol of Q or by the symbol of delta Q, जो भी आपको सूट करे. तो internal energy के लिए it was either U or delta U. Work done के लिए W or delta W. And energy supplied के लिए Q और डेल्टा Q. ठीक है, इसको तो एरेज कर दूं, सिंबल्स वापस लिख लूंगा. So as I was saying, this law tells us about what happens if you supply heat energy Q or delta Q to a system of ideal gas. अगर आप किसी भी आइडियल गैस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, सो आइडियल गैस उस हीट एनर्जी का क्या करेगी. To answer this question, what happens to the heat energy that you have supplied to a system of ideal gas? To answer this question, we make use of the first law of thermodynamics. Okay, so once again, the first law of thermodynamics basically refers to what happens to the heat energy that we have supplied to a system of ideal gas. Now, बिल्कुल basic level पे
If anybody asks you this question, कि यार आप आइडियल गैस को हीट एनर्जी सप्लाई करोगे, what should happen? I guess you'd all agree that energy supplied to the ideal gas can actually be used by the gas to serve two purposes. Some portion of the heat energy via action of the heat supplied can cause the gas to undergo expansion. So that is the second outcome. Heat supplied to a system of ideal gas molecules can simply be referred to as can be used up by the ideal gas to bring about a change in its temperature, can be used up by the gas to undergo expansion. So if you're okay with this, तो symbols की terms में then you should be in agreement कि मैं symbols की terms में इसको ऐसे लिख सकता हूँ. So heat supplied either Q change in temperature. So temperature affects the kinetic energy. And as stated earlier, kinetic energy affects the internal energy. So if that makes sense, the internal energy can be signified either by the symbol of U or by the symbol of delta U. और इसी के साथ साथ expansion, so उसको भी include कर दूं. So expansion relates to work done by the gas. So in terms of symbols, you can refer to this as either W or delta W. So energy supplied, wordings ki form mein you can say that the heat energy supplied is partly used to bring about a change in temperature, and the remaining amount of energy can result in the expansion. That is one way of putting it down in purely in terms of words. और अगर आप वर्डिंग्स के बजाय इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हो, द चॉइस इज योर्स. बट सिंबल की टर्म्स में heat energy supplied either Q or delta Q, whatever sounds reasonable. Change in temperature, so U or delta U, and expansion, so work done by the gas, so W or delta W. So अगर आप purely symbols की terms में लिखोगे, then the first law can be written as follows. अच्छा, अगर आपको डेल्टा नहीं लगाना है तो मत लगाइएगा, सिर्फ क्यू लिख दीजिएगा, वो आपकी अपनी चॉइस है. एग्जाम्स में वो दोनों सिंबल्स यूज कर रहे होते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे, आइदर क्यू और डेल्टा क्यू. ओके, चेंज इन टेम्परेचर, so either U or delta U, and work done by the gas, so W or delta W. So the formula written with the green marker inside the green brackets, that is one way of writing down the first law of thermodynamics. Hence मैंने statement भी लिखा हुआ है कि this is one possible way of writing down the first law of thermodynamics. Symbols की identification जरा याद रखिएगा, तो मैं nonetheless symbols की identification को लिख भी देता हूँ. So delta Q represents energy supplied. Delta U represents a change in internal energy. And delta W in this case represents work done by the gas. कोशिश करना कि सिंबल्स की फॉर्म में भी याद रख लो, और कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है ना, अब वो भी जरा याद रख लीजिएगा. तो एक रिजल्ट तो आपका ये हो गया.
So let me just proceed on a bit further, और फिर boxes बना दूंगा around the relevant stuff. Now, if I were to extend this idea further, और देखो मैंने next line में लिखा हुआ है कि what if I were to ask you to rearrange the above formula with the intention of making delta U the subject. So if I want to write down the same formula in a slightly different form. So if you are expected to rearrange the above result so as to make delta U the subject, then how would the formula be written as? So I'm sure you'd all agree. If I want to make delta U the subject, then I can write down the result as shown. Delta U is equal to delta Q minus delta W. So similarly, if I were to ask you, I don't want the minus sign to be appearing in my formula, then what will you do? I'm sure you would appreciate it's perfectly normal to not have the minus sign. So if I tell you कि यार मुझे minus sign नहीं चाहिए, so you would agree कि मैं minus sign को हटाकर मैं इसको प्लस बना तो सकता हूँ, no worries, लेकिन so long as कि आप इस बात को recognize करें कि जिस तरह अगर acceleration में कभी -4 आता हो, and if I tell you कि यार मुझे minus sign नहीं चाहिए, तो यू आर अलाउड कि आप माइनस साइन के बगैर लिखो, तो आप इसको 4 करके बिल्कुल लिख देते हो, प्रोवाइडेड दैट कि फिर आप एक्सेलरेशन का नाम चेंज करते हो और इसका नाम को चेंज करके आप इसको डिसेलरेशन बना देते हो, एंड देन एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन. तो बिल्कुल वैसे ही इफ आई टेल यू कि मुझे माइनस साइन नहीं चाहिए है, तो आप क्या करोगे? तो आप माइनस साइन को रिमूव आपने कर तो दिया है और आपने प्लस के साथ रिजल्ट लिख तो दिया है, बट फिर आपको इस बात को रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि जब आप डिफाइन करोगे तो फिर आपको डेल्टा डब्ल्यू को लिखना चाहिए है एज वर्क डन बाय के बजाय ऑन द गैस. ठीक है, आई एम श्योर यू वुड एग्री कि ये दो अलग अलग फॉर्मूलाज नहीं है, विच इज वाई मैंने फॉर्मूले के साथ ये लिखा है. दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग डाउन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और आगे लिखा है कि दिस इज द सेकंड वे ऑफ राइटिंग डाउन द सेम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. So do recognize and appreciate कि these are not two different results. Rather it's the same result जिसको मैंने rearrange करके रखा है. तो फर्स्ट वाले रिजल्ट के अंदर remember that delta W in the first result refers to work is done by the gas, which will be treated as positive in case of expansion, and it will be treated as negative in case of compression. और सेकंड वाले केस के अंदर the same delta W refers to work is done on the gas, which will be treated as positive in case of compression and will be treated as negative in case of expansion. तो बस ये चीज याद रखिएगा जो मैंने रेड वाले मार्कर से एरो बना के स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड किया हुआ है. सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंस्ट्रक्ट क्यों हुआ था, तो उसका रीजन मैंने आपको दिया था कि द फर्स्ट लॉ बेसिकली डील्स विद द आउटकम with regards to what will happen if you supply heat energy to a system of ideal gas molecules. So basically, the first law deals with the energy being supplied to a system of ideal gas. What will the gas do with that energy? To answer that, we suggested that some fraction of the energy supplied was used up by the gas to bring about a change in its temperature, while the remaining fraction was used up by the gas to undergo expansion. And on the basis of that, we
we came up with the first law of thermodynamics, and that was the first interpretation, जिसको मैं अब highlight कर रहा हूँ with the pink marker. So this was the initial outcome. इसके बाद we tried to write down the same equation in a slightly different form, and we ended up getting the second alternate way of writing down the same rule. उसको मैंने अब highlight कर दिया है, आपकी screen पर अभी आ जाएगा. So both of these forms are essentially the same result, written in a slightly different version. तो आपको results दोनों याद रखने हैं, और result के साथ साथ ये याद रखिएगा कि डेल्टा W किस चीज में क्या रिप्रेजेंट करता था. तो फर्स्ट वाले केस के अंदर, let me highlight this with the brown marker. फर्स्ट वाले केस के अंदर डेल्टा W was this. मैं ब्राउन से हाईलाइट कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा. सो एक सेकेंड, आई गेस आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाना चाहिए. ठीक है. सो फर्स्ट वाले केस के अंदर डेल्टा W रिप्रेजेंट्स वर्क डन बाय द गैस, पॉजिटिव फॉर एक्सपेंशन, नेगेटिव फॉर कंप्रेशन. और सेकंड केस में आई एम हाईलाइटिंग इट राइट नाउ. सो सेकंड वाले केस के अंदर इट शुड बी अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ यू. सेकंड केस के अंदर डेल्टा W रिप्रेजेंट्स वर्क इज डन ऑन द गैस, which is positive for compression and negative for expansion. तो अब यार ये मैं सारे हाईलाइटेड टर्म्स को तो इरेज आउट कर रहा हूँ. आई एम होपिंग कि आपको वैसे भी याद रह जाएगा. ये इस तरह का बना बना के दिखाने की जरूरत तो नहीं है, बट फॉर द टाइम बीइंग कम से कम याद रख लेना. और इसको अप्लाई कैसे करना है ना. सो बिफोर आई मूव ऑन टू दैट, आई थिंक किसी ने एक स्टेटमेंट लिखा था. सो लेट मी जस्ट क्विकली गो डाउन टू दैट स्टेटमेंट बिफोर आई स्टार्ट विद द वर्क. मुझे एक सेकेंड दीजिएगा, मैं हाईलाइटेड टर्म्स को इरेज आउट कर. रायन ने लिखा है डेल्टा डजंट नेसेसरली मीन चेंज, राइट? इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट हीट एंड वर्क डन एज वेल. बिल्कुल सही लिखा हुआ रायन. व्हिच इज व्हाई आई सेड both symbols are equally correct. So delta in this case doesn't necessarily mean change. It is used to represent heat in case of delta Q, work done in case of delta W, and internal energy in case of delta U. ठीक है. ऑल राइट. तो अब यार ये जो फाइनल वाले दो रिजल्ट्स लिखे हुए हैं ना, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको याद रह जाएंगे. तो यार मैंने इनको वर्डिंग्स की फॉर्म में भी लिखा हुआ है. तो लेट मी जस्ट शिफ्ट ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ताकि आप जरा इसको वर्डिंग्स की फॉर्म में रिलेटेबल कर लो. सो आई एम शिफ्टिंग इट. द सेम फॉर्मूलाज विल रीअपियर, बट वो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में होंगे. सो लेट मी जस्ट शो दैट टू यू. अच्छा, बिफोर आई कंटिन्यू, लेट मी जस्ट लेबल दिस एज स्लाइड 1. थोड़े से टर्म्स को मैंने हाईलाइटेड रखा हुआ है, उसको चेंज नहीं कर रहा. सो दिस इज योर स्लाइड 1. तो मुझे एक सेकंड देना बिफोर आई कंटिन्यू फर्दर. साथ साथ अपलोड भी करता जाऊं. तो एक सेकेंड. हाँ, ऑल राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. मैंने यही वाली चीज को एज ए सेट स्टेटमेंट्स की फॉर्म में प्रॉपर्ली लिखा हुआ है. सो पहले आप देख लो, और फिर इसके बाद ये डिस्कस करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है. सो एक सेकेंड ना बिफोर आई कंटिन्यू. दिस इज योर स्लाइड 2. So if they ask you for the word equation, so based on the first result, your word equation should be energy supplied to a system of ideal gas is used to increase the internal energy as well as work is done by the gas. Okay, so the first result equation
goes with the wordings of the first result. Or once again, I guess it is reasonable कि मैं इसके साथ साथ ये mention percent work done by the gas 3-4 दफा लिख लूं तो error के chances कम हो जाते हैं. Expansion to be treated as positive, compression to be treated as negative. And similarly, when you write down the same equation in the second alternate form, then this will be the result. Delta U is equal to delta Q plus delta W. And the wordings would be as follows. Wordings को equation के साथ match कर लो. Increase in internal energy is due to energy being supplied as well as work done on the gas. So इसके अंदर भी include कर दूं that delta W in this case signifies which in case of compression yields a positive answer and in case of expansion gives a negative answer. Now for solving questions, आपको दोनों में से कौन सा फॉर्म यूज करना है unless if the question mentions it's entirely your choice कि आप फर्स्ट वाला रिजल्ट यूज करो या सेकंड वाला रिजल्ट यूज करो. तो आपको कौन सा वाला सूट करता है ना वो entirely आपकी अपनी प्रेफरेंस है unless otherwise stated in the question. So let me give you an example. And what I'll do is, as an example, so we are moving on to the application of the first law. So as an example, what I'll do is, एक सेकेंड ना एक bifurcation कर दूं. All right. So as an example, what I'll do is कि मैं एक दो questions के अंदर दोनों रिजल्ट्स के साथ वर्किंग कर दूंगा. सो यू एटलीस्ट नो कि यार वर्किंग करनी कैसे. फिर जो भी आपको रिजल्ट सूट करे वो फिर उसको स्टैंडर्डाइज बनाकर वर्किंग कर लीजिएगा unless otherwise stated in the question. ठीक है. So let me give you an example with regards to how can we apply the first law of thermodynamics. Now, most of these questions that come in your past papers, उसमें they kind of divide the question into 3 different categories. So I'll start with the first category, जिसके अंदर आपको explanation देनी होती है. So first category के अंदर numerical solving नहीं होती, बल्कि rather explanation part ज़्यादा होता है. So let me start with that first. So as a question पहले देख लो. Okay. So diagram आप पहले देख लीजिएगा. There are two containers labeled as A and B. The volume of the gas is given to us. The pressure of the gas is given to us. And the tap is initially closed. Now, the wording of the question says, both containers are well insulated. It further says, use the first law to suggest why the temperature of A will change as the tap is opened. Okay, so both containers are well insulated. Use the first law to suggest why temperature of A will change as the tap is opened. अब यार usually this kind of a question generally यार ये 3 to 4 marks का होता है. So आप आंसर को कितनी डिटेल में लिखोगे ना और कैसे लिखोगे उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. So which result do you want to use? We'll discuss that. But पहले वर्डिंग्स को फ्रेम कैसे करना है ना उसको देख लो. मैं स्टेटमेंट रीड करता जा रहा हूं तो आप जरा मेरे आंसर के साथ साथ क्वेश्चन की वर्डिंग्स को कोरिलेट कर लो. So your first statement should be, well insulated means no thermal energy is allowed to enter or leave the system. Hence, delta Q is 0. ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया. So well insulated means no thermal energy is allowed to enter or leave the system. Hence, delta Q is equal to 0. एक चीज ये हो गई. अब second statement. When tap is opened, gas will transfer from B to A. अच्छा, why from B to A?
So look carefully at the values. B का pressure check करो और A का pressure check करो. You'd expect the gas to transfer from B to A because gas always travels from a region of high pressure and goes towards the region of low pressure. Okay, so coming back to the statement. When the tap is opened, gas will transfer from B to A from a region of high pressure to a region of low pressure. Yes, we can say gas in B has expanded, but उमर उसका फायदा नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में टेम्परेचर ऑफ ए के बारे में पूछा है तो तुम्हारे स्टेटमेंट की रेलेवेंस नहीं है क्योंकि उमर क्वेश्चन के अंदर दे आर आस्किंग यू अबाउट ए तो तुम बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लिखोगे ना उसका कुछ फायदा नहीं है तो दैट स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ इज करेक्ट बट मेरे यूज में नहीं आएगा ओके सो व्हेन टैप इज ओपन मैं सेकंड स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ gas will transfer from B to A. Therefore, gas in A will get compressed slash work is done on the gas. तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट हो गया ठीक है तो अब दो स्टेटमेंट्स तो पहले आपने लिख लिए अब लेट अस अज्यूम कि अगर आप फर्स्ट वाला रिजल्ट यूज करते हो आई एम होपिंग कि आपको फर्स्ट रिजल्ट याद होगा फर्स्ट रिजल्ट ये था तो लेट्स सी कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें कंक्लूड कर ली हैं बेस्ड ऑन द फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव कंक्लूडेड कि डेल्टा क्यू की वैल्यू शुड बी 0 ठीक है ये पहली चीज हो गई बेस्ड ऑन द सेकंड स्टेटमेंट in this equation we have concluded delta w should be negative and I'm sure you'd appreciate why negative because in the formula delta w represents work is done by the gas whereas in the question the gas is undergoing compression so hence negative so let me repeat myself in the formula delta w represents work done by the gas whereas in the question gas in A has undergone compression so that is why delta w should be treated as negative तो ये दो चीजें हो गई if I ask you एक सेकेंड ओके सो इफ आई आस्क यू ये सारे एरोज वगैरह जरा प्लीज मिटा दो ऑल राइट सो इफ आई आस्क यू कि यार जरा मुझे सजेस्ट करो which value should I put in inside the green bracket so as to balance out my equation so I'm sure you would all agree on the left hand side if there is a zero then to balance out the equation on the right hand side the green bracket should contain a positive sign so as to balance out the equation and if you guys are okay with me putting in a positive sign inside the bracket over here then that would mean that my final conclusion will be as follows. Final conclusion please आप लोग read कर लो. So ये yellow वाले highlighted terms को please जरा आप लोग read कर लेना. और question की wordings को भी वापस read कर लो. So you know how to approach the question. ठीक है तो question की wordings को भी देख लो. And based on the first result, how do we interpret the answer in the last three lines? अब वो भी read कर लो. क्योंकि तो मैंने last वाली lines में लिखा है since delta W is positive, therefore internal energy increases, comma, kinetic energy also increases, comma, temperature increases, hence changes. So if you were using your first result, then this is how the answer's approach would look like. Now, if on the other hand, you wanted to give the answer using the second result as your frame of reference, तो अगर आप second result को use कर रहे होते
So कैसे आंसर देते वो जरा देख लीजिएगा. The point which I'm highlighting with the brown marker, the first point, that will essentially remain the same. So ये as it is copy हो जाएगा. The second point which I'm highlighting with the yellow marker, ये भी as it is रहेगा. इसकी wording में भी कोई change नहीं आएगा. So ये भी as it is copy हो जाएगा. So from the top, the portion highlighted right now, the first statement and the second statement will essentially stay the same. However, if you were using the other result, then this is how your equation will be interpreted and written as. Then again, delta Q will be 0. This time, delta W will be written down as a positive function. It's a Y positive. So your answer should be that in this equation, delta W signifies work done on the gas. And in reality, the gas is undergoing compression, which is why this function must be treated with a positive sign. And then if you try to balance it out, so with the green colored bracket, again, if you are asked what value will we plug in? So once again, based on the balancing effect, the result is going to be positive. And if you notice, your final answer is going to conclude the same way as before. So this kind of tells you it doesn't really matter कि आप कौन सी वाली फॉर्म यूज करते हो, whether the first result यूज करते हो या second वाला. If used appropriately, तो फिर आपके पास जो final outcome बनता है, that is essentially the same. सही. तो यार इस पॉइंट तक कुछ पूछना है तो पहले जरा मुझे सजेस्ट कर दो. सो आई एम होपिंग कि आपको इक्वेशन याद रह जाएगी, एंड आई एम होपिंग कि आपको ये भी याद रह जाएगा कि डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाय द गैस एक केस में है, एंड डेल्टा डब्ल्यू इज वर्क डन ऑन द गैस इन द अदर केस. एंड द फैक्ट दैट कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा बेस्ड ऑन द सिचुएशन, हाउ कैन वी कोरिलेट दैट. सही. सो कुछ पूछना हो तो जरा सजेस्ट कर दो, अदरवाइज यार थोड़े बहुत लोग मुझे ओके कर दो. सो आई नो यू गाइस आर विद मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि फिर मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मूव करके आगे का पोर्शन करा दूं. आई टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, बट बिफोर दैट जरा 4-5 लोग ओके करके मुझे सजेस्ट कर देना कि यू हैव फॉलोड द वर्किंग अप टिल नाउ. ठीक है यार, मैं इस वाली स्लाइड को भी अपलोड कर दूंगा. कोई क्वेश्चन हो तो तब तक जरा पुट फॉरवर्ड कर देना, अदरवाइज मैं इसको आगे. ओके, सो दिस विल बी स्लाइड 2. ठीक है यार. तो उमर ने पूछा हुआ इन द सेकंड रिजल्ट व्हाई वर्क डन इज पॉजिटिव. उमर, पहले सेकंड रिजल्ट के अंदर तुम बताओ ये डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट क्या करता था. जी उमर, कुछ याद करो कि ये डेल्टा डब्ल्यू सेकंड रिजल्ट में क्या रिप्रेजेंट करता था. अगर याद नहीं आएगा ना तो मैं ऊपर शिफ्ट करके तुम्हें रिमाइंड करा देता हूँ. तो तुमने खुद ही लिखा है कि डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता था वर्क डन ऑन द गैस. ठीक है, अब क्वेश्चन में जाओ और जिस टर्म को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जरा उसको रीड करो. और फिर आई थिंक तुम्हें खुद भी समझ में आ जाएगा कि मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा हुआ है. सो अगर आ जाए तो मुझे यस कर दो, ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड करूं. ऑल राइट, अंडरस्टूड, हो गया. ठीक है गाइस, 5 मिनट रुकता हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ. ओके.
मैं 5 मिनट म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को, फिर इसके बाद स्टार्ट करता हूँ। ऑल राइट यार, तो अब नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ फॉर द रिमेनिंग पोर्शन, तो वो भी जरा देख लेना यार। ऑल राइट, सो दिस शुड बी द स्लाइड 3। इनफैक्ट लेबलिंग कर ही देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज स्लाइड 3। ठीक है, क्वेश्चन की वर्डिंग जरा प्लीज देख लेना। सो पहले मैं स्टेटमेंट वगैरह लिख लूँ, फिर इसके बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ। A mass of 1 kilogram of water at 100 degrees
is boiled to form, मैं डिटेल्स भी दे दूंगा, steam at 100 degrees at pressure 100 kilopascals. The volume of water is 0.001 meter cube, and when it converts into steam, the volume increases to 1.67 meter cube. Calculate the increase in the internal energy using the first law of thermodynamics, given that specific latent heat of vaporization is 2.26 times 10 to the power of 6 joules per kilogram. ठीक है सर, ये आपके पास डिटेल्स गिवन है, मैं रीड थ्रू कर दूं, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना, उसको पे कैसे अप्लाई करना है ना वो देख लेते हैं. लेट मी जस्ट हाईलाइट द रेलेवेंट kilogram. Okay, so you have 1 kilogram of water at 100. It boils to form a steam at 100. The pressure is given to you as 100 kilopascals. The volume of water is 0.001 meter cube. And when it converts into steam, the volume increases to 1.67. And the question is asking us to calculate the increase in the internal energy. So you find out karna using the first law of thermodynamics, and specific latent heat of vaporization is given to us, which is 2.26 times 10 to the power of 6. तो यार अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे ना, उसको देख लेते हैं. नाउ मैं इक्वेशन, तो अगर आप पहले पहले तो ये कर लेते हैं यार, अगर आपको फर्स्ट रिजल्ट से वर्किंग करनी है ना, तो वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं. फिर अगर आपको चाहिए हो तो आप सेकंड वाले रिजल्ट से अपने आंसर को कंफर्म भी कर लेना. फर्स्ट रिजल्ट आपका ये था. अच्छा, जो फाइंड करना है ना उसको रेड से लिख लेता हूँ. ऑल राइट, तो नाउ बिफोर आई स्टार्ट प्लगिंग इन द वैल्यूज, पहले मैं साइड नोट पे थोड़ी सी वर्किंग कर लूँ. द आंसर्स व्हिच आई गेट फ्रॉम द साइड नोट ना, फिर उसको बाद में अपनी मेन वर्किंग के अंदर इंक्लूड कर दूंगा. नाउ सिंस अ लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस, ऐसे लिख लेता हूँ. सिंस वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, so the formula should be Q is equal to mLV. अप्लाई करता हूँ. Mass is 1. Latent heat is 2.26 times 10 to the power of 6. तो Q का आंसर आ जाएगा. I can plug in this answer. ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया.
ठीक है, जो रिजल्ट्स आते जा रहे हैं ना वो लगाता जा रहा हूँ। मैंने पहला काम ये कर लिया कि since water is converting into steam, that's the working done with the green marker. So Q is equal to mLV. Mass was given to me. Latent heat was also given to me. So the energy supplied Q works out to be 2.26 times 10 to the power of 6. I've plugged in that answer. अच्छा, दूसरी चीज, इसको सेपरेट कलर से शो कर दूं. Since work done is pressure times change in volume. So pressure is 100 kilopascals. चेंज इन वॉल्यूम आप जरा टॉप से देख लेना. नंबर्स आप जरा देखते जाइएगा प्लीज. यार किसी का वर्कआउट करके अगर वर्क डन का भी रिजल्ट आ गया हो. अब अगर आपको W लिखना है तो भी सही है, अगर आपको डेल्टा W लिखना है तो वो भी आपकी चॉइस है, जो भी आपको ठीक लगे. मेरा ख्याल है वर्क डन का रिजल्ट ये बन जाएगा. जरा ये मुझे कैलकुलेट करके दे देना. इट्स 0.001. थैंक यू शकीब. तो यार मैंने एक जीरो मिस आउट किया हुआ था. Can anyone just confirm the final answer for me? And if the result stays fine, तो फिर मैं उस नंबर को भी प्लग इन कर दूं. तो यार जरा ये वर्क डन का आंसर पहले देख लीजिएगा, सो आई कैन प्लग इन दिस आंसर ओवर हियर. ओके, सो इट्स 1.67 कंजा. आई गेस फिर तो सही है ना, 10 का पावर भी ठीक है. मैंने 2 SF या 3 SF पे लिख दिया है. ऑलराइट, सो आई थिंक कंजा. यार ये वर्क डन वाले रिजल्ट को यहाँ पे पुट इन कर लेते हैं. while I'm putting in the answer, recognize the fact कि मैंने इस आंसर को पॉजिटिव लिखा है. और पॉजिटिव लिखने का रीजन ये है कि द फॉर्मूला, पॉजिटिव लिखने का रीजन प्लीज केयरफुली सुन लें, कि फॉर्मूला recognizes delta W as work done by the gas. And in this example, the volume is also increasing. So expansion is taking place. Hence, I've written down delta W as a positive function. वापस कह रहा हूँ. In the formula, delta W signifies work is done by the gas. In the question as well, when water converts into steam, the volume is increasing because expansion is occurring. So formula takes into account work done by the gas. And in the question, expansion is taking place. Hence, I've written down the answer as a positive feature. और अगर अब आप डेल्टा U को कैलकुलेट करोगे तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी का रिजल्ट जरा प्लीज फिगर आउट करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है. एंड दिस इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट रिजल्ट. ओके यार, कंजा ने, थैंक यू कंजा. 2.09 10 to the power of 6. All right. Now, if you were to attempt the same question, but using the second result, so let me do one thing. इसको ऐसे ही रहने देता हूँ. Let me just make a horizontal line over here. So if you were to attempt the same question, but this time on the basis of the second result, क्या फर्क पड़ता ना, वो डिस्कस कर लेते हैं. And I think you would see for yourself that the final answer is not going to change. Let's see why. Second result ये था. जो फाइंड करना है ना, उसको दोबारा रेड से लिख लेता हूँ. अप्लाई करते हैं. So the answer for delta Q, which was calculated at the top
will remain the same. I'm just copying down that same answer from the top. The answer for delta W essentially stays the same, with the exception of the fact that I'm writing down the same answer, but I should rather write down this answer with a negative sign. And if you're wondering कि यार मैंने माइनस साइन के साथ क्यों लिखा है, तो उसकी justification है कि in this formula delta W represents work is done on the gas, whereas in the question expansion was taking place. So the formula recognizes the term work done on the gas, whereas in actual terms expansion is taking place. So consequently, we have plugged in a negative sign over here. And again, if you make a calculation to work out the answer for delta U, once again, you would recognize you'll end up getting the exact same result. So I guess the two examples that we have done, one on the previous slide versus the other one shown right now, kind of confirms it doesn't really matter which formula you're using, you will eventually end up getting the exact same result. Okay, so let me just repeat myself. In the first example, since delta W was representing work done by the gas, first example में, first result में rather, delta W was representing work done by the gas. And since in the question expansion was occurring, hence I wrote down my answer as a positive function. ठीक है? और second वाले result के अंदर, since the formula was implying work done on the gas, whereas in the actual question, the gas was undergoing expansion, or rather the liquid was undergoing expansion. So expansion हो रही थी in the question, and the formula was taking into account the term work is done on the gas. Hence, I had to write down the answer with a negative sign. Once we worked it out, we realized कि दोनों answers exactly same आ रहे हैं. Now, before I conclude, बस मुझे एक final question ये पूछना है कि what if the question further goes on to say imagine if the question asks you this, calculate the change in internal energy और आगे ये लिखा हुआ हो, इसको मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, ये करा दूं फिर कंक्लूड करता हूँ. अगर क्वेश्चन आपको ये कहता है कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बट आगे लिखा है पर मॉलिक्यूल, सो माइंड यू आपने आंसर तो सही निकाला है 2.09 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6 जो अली असगर वगैरह ने और कंजा वगैरह ने बताया था. पर मॉलिक्यूल का मतलब है कि अब थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला काम ये करना पड़ेगा. So before I move on to Ali Asgar's statement, I think you would all appreciate that the answer of 2.09 times 10 to the power of 6 joules is the change in internal energy, but this is the change for 1 kilogram of water, as the question specified. For a 1 kilogram of water, आपका रिजल्ट ये आ रहा था. And the question is asking you कि आपको 1 molecule के लिए कैलकुलेट करना है. तो आई थिंक सबसे पहला काम तो ये कीजिएगा कि आपको केमिस्ट्री यूज करके जरा जस्टिफाई करना पड़ेगा कि the answer that you have is for 1 kilogram of water, but the question is asking you calculate the change in the internal energy per molecule. तो जो अली ने लिखा है ना, पहले मैं उससे स्टार्ट करता हूँ. हुसैन तुम्हारा स्टेटमेंट बाद में यूज में आएगा. आई थिंक सबसे पहले बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री मुझे ये काम करना चाहिए. एवोगैड्रोस कांस्टेंट बाद में आएगा. पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो.
ये करना जरूरी है। नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालते हैं, फिर इसके बाद आगे प्रोसीड करता हूँ जो रोहेल वगैरह ने लिखा है या हुसैन ने लिखा है। मास बेटा 1 किलोग्राम है, सो 1000 ग्राम्स सही। और एमआर वाटर का आई एम अज्यूमिंग सबको पता है 18 ग्राम्स। सो पहले नंबर ऑफ मोल्स, आई एम सॉरी मैंने गलती से मॉलिक्यूल्स लिख दिया, दैट शुड बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट रादर। नंबर ऑफ मोल्स का आंसर अली देखो 50s में आ रहा होगा। नंबर ऑफ मोल्स जरा दे दीजिएगा। आई थिंक 55 पॉइंट समथिंग आएगा शायद, 55.7 आई बिलीव। हाँ जी, एनीवन? सही है। सो पहले नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जरा ये चेक करो प्लीज 55 पॉइंट कितने आ रहे हैं। और फिर हुसैन ने लिखा था डिवाइड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट। सो आई थिंक डिवाइड तो गलत हो जाएगा। ओके, मोल्स आ रहे थे न 55.6, 55.6 कर दो। ओके, फिर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स with Avogadro's constant to get number of molecules. So कंजा आई बिलीव तुम थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुई थी, तो जो स्टेटमेंट तुम्हारा मिस आउट हुआ प्लीज यहाँ से बेटा देख लेना। So number of moles multiplied by Avogadro's constant, इसका आंसर आई गेस अली ने दिया हुआ है, gives you the number of molecules. अली ने दिया था 3.34 times 10 to the power of 25. So these are the number of molecules present in 1 kilogram of water. So up finally I can calculate the change in internal energy per molecule. Hence, change in internal energy per molecule will be the total result, which I believe was 2.09 times 10 to the power of 6 divided by the number of molecules of water present in a mass of 1 kilogram, 3.34 into 10 to the power of 25. So I guess यार ये रिजल्ट बन जाएगा, हाँ, डेल्टा यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उमर तुमने सही लिखा हुआ है, और आई थिंक फाइनल आंसर भी अली ने लिखा हुआ था, विच आई बिलीव इट इज 6.2। इसके यूनिट्स कोई बताएगा बिफोर आई कंक्लूड? 10 to the power of minus 20 यूनिट्स क्यों आने चाहिए? यूनिट्स फॉर इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल। जूल्स पर मोल गलत है, सिर्फ जूल्स है ना। जूल्स बिल्कुल सही है, बट जूल्स पर कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज मॉलिक्यूल्स डोंट हैव एनी यूनिट्स टू बिगिन विथ, है ना। मॉलिक्यूल्स आर अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हाँ जी, जो रोहेल ने लिखा है, तो सिर्फ जूल्स आना चाहिए। सो इंटरनल एनर्जी, rather change in internal energy per molecule will have the same units as internal energy, that is joules, because molecules don't have any units to begin with.
तो ये आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है यार बेटा, इस वाले पॉइंट पे आज वाली क्लास को कंक्लूड कर रहा हूँ।